So till yesterday, whatever we have learned, if anyone having any doubts, any question, quickly ask first. हमने कल का डेट में जो एक्सरसाइज किया था वो था एक्सरसाइज नंबर 8 पेज नंबर 161, दैट इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. तो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी रिलेटेड डाउट्स और क्वेश्चंस इफ एनीवन हैविंग, especially I will ask for the word problems. I think word problems we have not discussed yesterday. 2 word problems are there. So first let us discuss those 2 word problems. So exercise number 8. Exercise number 8. The topic is measurement of capacity. Measurement of capacity. Okay, so measurement of capacity means the liquid thing which we use to measure. Okay, so first question we have done. Question number 2 is the word problem. This is the page number 161 which we are talking about or which we are discussing. So page number 161, exercise number 8. Okay, so this is what the measurement of capacity is. Question number 2 I am discussing, wherein it is asking the first cylinder contain this much of cooking gas. So in the first cylinder, let us write how much cooking gas is there in first cylinder. How much quantity of cooking gas is there, that you have to write first. 9 liter. So 9 liter and 561 milliliters. So that this much of the oil or this much of the capacity of cooking gas is there in the first cylinder, and the second cylinder contains this much. So in second cylinder, how much? Second cylinder 4 liter 407 milliliter, more than this much of more than 1/3 of the first one. So 1/3 of first one means this divided by 3. तो हमने यहाँ पे कल भी डिस्कस किया था, हाफ ऑफ दिस मीन्स दिस डिवाइडेड बाय 2, 1/3 ऑफ दिस मीन्स दिस डिवाइडेड बाय 3, 1/4 ऑफ दिस मीन्स दिस डिवाइडेड बाय 4, 1/5 of this means this divided by 5, 1/6 means this divided by 6. So whatever the number given, if it is asking third, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 like that, you have to divide by that much of number. So here, because it is asking 1/3 of the first cylinder, so first we need to calculate this much more than 1/3 of the first cylinder. So in second cylinder, this much more than 1/3. So this 1/3 means this much divided by 3, 1/3 of the first cylinder. So this is the most important thing which you need to understand. 1/3 of the first cylinder is equal to how much? So now we will write 1/3 of first cylinder means, so here 1/3 of the first cylinder means this divided by 3. So this divided by 3 means if you divide 9,561 milliliter, it will be, so 9,561 milliliter if you divide by 3, whatever the result will come, that much will be the 1/3 of the first cylinder. So यहाँ पे हम लोग डिवाइड करके देखते हैं. 3 are 9, 3 1 are 3, 4 5 2 26, then 26, 3 9 are 27, 3 8 are 24,
3 8 are 24, so 21, 3 9 are, sorry, 3 7 are 21, so this much of milliliter, that means 3 liter and 187 milliliter. So 3 liter and 187 milliliter, this is the 1/3 of the first cylinder. Now it is asking in second cylinder you are having 4 liter and 407 milliliter more than the 1/3 of the first cylinder. So 1/3 of the first cylinder means 3 liter 187 milliliter. So that means 4 liter 407 liter more than this means you have to add these two value. ये दोनों वैल्यू को आपको ऐड करना है, ठीक है. अगर हम बोल रहे हैं कि this much of more than this, that means these two you have to add. Okay, this is what I have found, the 1/3 of the first cylinder. 1/3 of the first cylinder means 1/3 of the first cylinder means 9 liter 563 milliliter or 9561 milliliter divided by 3. इसको 3 से डिवाइड करने से हम लोग का आ रहा है 3187. So 3 liter 187 milliliter. This is 1/3 of the quantity. Now you have to add these two and check the total amount of gas in the cylinder, second cylinder. Okay. So the total gas, so find the quantity of the gas in the second cylinder. So here you will write, therefore the quantity of gas in the second cylinder will be, you have to write like this and you have to add, cylinder will be equal to this plus this, right? तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 liter 407 milliliter plus 3 liter and 187 milliliter. Now you have to add these two. तो ये दोनों को ऐड करके देखते हैं. 407 3187. If you add these two, 7 2 are 14, 4 1 carry, 8 1 9, 4 1 5, 3 4 7. So 7 liter 594 milliliter. So 7 liter and 594 milliliter. This much of the 594 milliliter. This much of the gas will be there in the second cylinder. Second cylinder में इतनी गैस हम लोग का रहेगा, ठीक है. तो एक बार फिर से अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए. सिंपल है, just whatever the amount of cylinder we have, amount of gas we have in the first cylinder, first you have to find the 1/3 of the first cylinder by dividing by 3. तो 3 से डिवाइड करके हमने 1/3 of the cylinder निकाला, which we got is 3187 milliliter. So 3187 milliliter मिलने के बाद हमने जो जितना ज्यादा था सेकेंड सिलेंडर में, that we have added. So this much if you add with this one 1/3 of the first cylinder, then you will get 7 liter 594 milliliter. So this is how very easily you can solve the questions related to this type of word problems. Okay, so it's very easy. If anyone not understood quickly, you can ask. किसी को अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो पूछें. Only two steps which we have. One, step number 1 is here 1/3 of the first cylinder. ये निकालना step 1. And step 2 is to find the total quantity by adding the 1/3 of the first cylinder and as much as more it is saying of the second cylinder. Yes, very good. So okay, very nice. So now let us move to the next question then. Question number 3. Maximum problem students used to face in the word problems only, and especially this type of word problems wherein it is very difficult to understand what the question is asking. But simply 1/3, 1/4, 1/5 if you understand,
then you can very easily solve, and less than and more than, these two concepts are there. If 1/3 means divided by 3, 1/4 means divided by 4, half means divided by 2. Okay, very nice. So next, if we are talking about question number 3rd, let us see what this is asking. So the first container contains this much of milk. तो एक कंटेनर है जो कि फर्स्ट कंटेनर है. ओके, सो यहां पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट कंटेनर contains 8 liter and 456 milliliter, this much of milk. So first container जो है उसमें 8 लीटर और 456 मिलीलीटर जो है, 8 लीटर्स एंड 456 मिलीलीटर जो है मिल्क है एक कंटेनर में. नाउ इट इज आस्किंग, इट इज सेइंग द सेकंड कंटेनर कंटेंस, सेकेंड कंटेनर में जो है 764 मिलीलीटर, मोर देन half of that of first one. So what will be the half of this first one? Quickly tell everyone. First tell me everyone, how much will be the half of this first one? Because it is asking 764 milliliter more than half of the first cylinder or first container. So what will be the half of the first container? Quickly tell me first. हाफ कंटेनर में जितना मिल्क है उसका आधा कितना हो जाएगा? 4 to 28. Let us see. आधा का मतलब होता है whatever we have this divided by 2. ठीक है, तो हमारे पास है 8, 4, 5, 6. इसको 2 से डिवाइड करके देख लो. ओके, 4 2 are 8, 4 2 2 are 4. ओके, देन 5, so 2 2 are 4, 1 6, 8 2 are 16. So हम लोग का जो क्वोशेंट आ रहा है that is 4 2 2 8. 4 2 2 8. So this much will be the half of the milk which we have in the first container. So यहाँ पे हम लोग लिखेंगे second container contains this much of more than half of the first one. So यहाँ पे लिखेंगे हम लोग half of the first container. हाफ ऑफ द फर्स्ट कंटेनर का मतलब कितना हो रहा है पहले हम लोग वो लिखेंगे. मीन्स इज इक्वल टू हाउ मच? 4 लीटर एंड 228 मिलीलीटर. सो 228 मिलीलीटर, दिस इज द हाफ ऑफ द फर्स्ट कंटेनर. ओके, ये हाफ ऑफ द फर्स्ट कंटेनर हो गया. 228 है, ठीक है. ऐसे लाइट आ रहा है तो दिख नहीं रहा है क्लियरली. दिस इज 228. ओके, सो ओके, सो 228 मिलीलीटर. Now you have to tell 764 milliliter more than half of the first one. So now you have to add 764 milliliter. So 764 milliliter more than that is equal to, now 764 milliliter. So 764 milliliter more than that is equal to how much? So this plus 464 ml, so 4 liter 228 milliliter plus 764 मिलीलीटर. तो ये दोनों को ऐड करके देखिए कितना आ रहा है. यू नो नीड टू अंडरलाइन, आई एम अंडरलाइनिंग फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस. So in liter we have 4, in milliliter we have 228, and in milliliter we have 764. So now if you add this, so 8 plus 4 is 12, 2 1 carry, 6 plus 2 is 8 plus 1 is 9. Okay, 7 plus 2 is 9 and 4. So 4 liter 992 milliliter. This is the
more than this much more than half of that. So इसका आंसर आ जाएगा 4 लीटर 992 मिलीलीटर. So 4 liter 992 milliliter. But this is not only the question which it is asking. Question का और एक part है. So in this question, in the second part, what it is asking, quickly check it out. In the first part, it is very simply asked that if one container contains this much of milk and another containers contain this 764 milliliter, more than half of the milk contained in first. So पहले हमने क्या किया, हाफ निकाला, जो भी मिल्क है उसका हाफ 2 से डिवाइड करके 4 लीटर एंड 228 मिलीलीटर निकला. अब हमने 764 मिलीलीटर ऐड कर दिया, because it is asking 764 milliliter more than half of that. So with that we have added 764 milliliter. So this is the first answer which we got. Okay, I can see some of the students are answering also. Very nice. The second part of the question is asking another container, third container is there. So the third container contains 268 milliliter less than that of the second one. So यहाँ पे अब जो है second container का हम लोग का निकल गया है ये, ठीक है. This is the first container, this is half of the first container, this is the second container, because this is saying second container 764 milliliter more than that. So this is the amount of milk which contained in the second container. Now it is asking in the third container we have 268 milliliter less than the second one. तो इससे अब हम लोग को 268 milliliter less करना है, ठीक है. So 992 इससे हमें लेस कितना करना है, 268. So 268, just subtract 268 milliliter. Okay, so this is, you can write milliliter, this is liter. So 8 plus 4 is 12. Okay, so this is 12, this will be 8. So 6 plus 2 is 8. Okay, so this is 2, 7 plus 2 is 9. This is 4. So 4 liter and 724 milliliter. Okay, so 4 liter 724 milliliter is the milk contained in the third container. How? Because in the third container, in the question it is saying कि थर्ड कंटेनर में जो भी सेकंड कंटेनर है उससे जो है 268 मिलीलीटर लेस है, तो हम लोग को उससे 268 मिलीलीटर सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, ठीक है. So if you subtract 268 from that, then we are getting 4 liter and 724 milliliter. Okay, so यहाँ पे हम लोग लिखेंगे the milk content in the second container is equal to this much. तो यहाँ पे एक वर्ड आप लोग एक लाइन लिख लोगे यहाँ पे, therefore the milk contents in the second container is equal to this much, 4 liter 992 milliliter. इसके बाद और एक स्टेप्स आगे हम लोग लिखेंगे इन फॉर द थर्ड कंटेनर. यहां पे हम ऊपर में लिखते हैं, शो फॉर द थर्ड कंटेनर अगेन यू हैव टू राइट. ओके, लास्ट स्टेप एक बार आप लोग लिख लो यहाँ पे, द मिल्क कंटेंट इन द थर्ड कंटेनर, because it is asking for the third container also. So milk content in third container is equal to whatever the second container plus less than 268. So second container we have 4 liter 992 milliliter minus 268 मिलीलीटर. तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो आंसर आया दैट इज 4 liter and 724
मिलीलीटर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहां पे दो क्वेश्चन था, एक तो सबसे पहले फर्स्ट कंटेनर का दिया हुआ था, हमने सेकंड कंटेनर का निकाला। यस सोनी, आर यू सेइंग समथिंग? हाँ, जिसका भी आंसर आ रहा है सही है, 7 लीटर एंड सॉरी 4 लीटर एंड 724 मिलीलीटर, जिसका भी आ रहा है सही है सेकंड वाला का, आई मीन सेकंड का सेकंड पार्ट का ऑप्शन। सो यहाँ पे दो पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट कंटेनर में जितना मिल्क दिया हुआ है उसका बोला जा रहा है कि फर्स्ट आपको 1/3 निकालना है, राइट? बिकॉज the first container it was given, the second container contains this much of more than half of the first one। तो पहले हमने half of the first one निकाला, half of the first one निकालने के बाद it is saying 764 milliliter more, so we have added 764 and we got the required quantity for the second container, and after getting the quantities for the second containers as much as the milk contains in the second container, again you have to find for third container. Okay, so for third containers what are the cases? In third containers it contains 268 milliliter less than that of the second container. Okay, so third container contains this much of less than that of the second container. So यहाँ पे the third containers में जो दिया हुआ है 268 मिलीलीटर लेस दिया हुआ है जितना सेकंड कंटेनर है। तो सेकंड कंटेनर में हम लोग का इतना था, उससे 268 माइनस कर दिया हमने, और जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकला दैट इज फॉर द थर्ड कंटेनर्स। ओके, सो इट्स वेरी इजी both the question if you see. After then if you move to the exercise number 9, questions based on time. So we have very easily learned, we have very deeply learned about the chapter time. So I hope you can do by yourself the questions related to the next exercise, but still if anyone facing any doubts we can discuss in our next class. Okay, till now today whatever we have discussed, if anyone having any question, any doubts, you can ask, you can write in message. बात नहीं करेंगे, म्यूट में रहेंगे सभी, जिसको कुछ पूछना होगा राइट करें, मैसेज में लिखेंगे, ठीक है? तो बताइए, और किसी को कुछ अगर डाउट है इसमें, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मेजरमेंट ऑफ वेट, तीनों मेजरमेंट से रिलेटेड, इफ एनीवन थिंक एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? ओके, नो, वेरी नाइस। उसका भी नहीं है, बहुत बढ़िया, जिसका है वो पूछिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा 8 hours इज इक्वल टू, इट इज आस्किंग डैश इनटू डैश मिनट्स इज इक्वल टू डैश मिनट्स। सो 8 hours को हम लोग को अगर मिनट में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? 8 hours को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं? हाँ, we know 1 minute is equal to 60 seconds, but here it is asking to convert into minutes from hours. So 1 hour is equal to 60 minutes, right? So that is how, because we know 1 hour is equal to 60 minutes. So with the help of this concept, 8 hours will be 8 multiply 60 minutes. Okay, so if you multiply 8 multiply 60, whatever the answer will come, that much of minute it will be the answer. So 6 8 are 48, 480 minutes. So this is how you can do the first question of exercise number 9, which is fill in the blanks. Talking to the next question which we have in this exercise, at 11:30, 11:30 का टाइम में द मिनट हैंड इज एट। तो अगर आप लोग क्लॉक देखोगे, ठीक है,
तो हाफ पास्ट 11 का मतलब क्या होता है, पहले ये समझने का कोशिश कीजिए कि 11 से हाफ मिनट जो है, हाफ एन आवर्स जो है पास हो गया है, ठीक है, पास हो गया है। तो ये 12 होता है 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11, इस तरह से क्लॉक होता है। नाउ इट इज सेइंग एट हाफ पास्ट 11, तो हाफ पास्ट 11 का मतलब होता है कि 11 से आधा पार हो गया है, तो 11:30 हो गया है। हाफ पास्ट 11 का मतलब होता है 11:30, राइट। सो इन दैट क्वेश्चन इट इज आस्किंग इन हाफ पास्ट 11 द मिनट हैंड इज एट, तो ये मिनट हैंड कहां पे है, कहां पे है, मिनट हैंड 30 में नहीं है, मिनट हैंड किस हाउस में है वो पूछा जा रहा है। 30 मिनट ये कवर करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन 2 पूछा जा सकता है कि हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स। सो अगर ये पूछा जाता है कि हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स, देन आंसर विल बी 30 मिनट। बट ये अगर पूछा जा रहा है कि इन विच हाउस दिस हैंड विल बी, देन इट विल बी इन 6, ठीक है। तो क्वेश्चन इज आस्किंग इन विच हाउस, सो 6 विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। So this is how you try to solve the rest of all questions of this exercise. Further we will discuss in our next class. Okay. Thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye.